A 100 turns closely wound circular coil of radius 5 cm has magnetic field 3.14 into 10 to the power minus 3 Tesla. The current flowing through the coil and magnitude of magnetic moment of this coil are respectively. Take mu dot is 4 into 10 to the power minus 7 Tesla meter per ampere. So, radius is 0.05 meter, turn n is equal to 100, this is B is equal to 3.14. Suppose current through this coil is I and magnetic moment is capital M. Magnetic field at the center of the coil is mu dot N I by 2R. Mu dot is this is 4 pi into 10 to the power minus 7, n is 100, I is to be calculated 2 into 0.05 and this is equal to 3.14 10 to the power minus 3 or 4 into 3.14 into 10 to the power minus 5 I by 0.1 and 3.14 into 10 to the power minus 3. 3.14 से 3.14 क्रॉस हो गया तो I will be 10 to the power minus 3 into 0.1 by 4 into 10 to the power minus 5. 10 by 4, this is 2.5 ampere. Magnetic moment of this coil M होता है N I A. A is cross sectional area. इसको स्मॉल a से डिनोट करें. N is 100, I is 2.5 and pi r square. $250 into 3.14 into r is 0.05 का स्क्वायर. $250 into 3.14 into 25 into 10 to the power minus 4. $6250 into 3.14 into 10 to the power minus 4. This is approximate 2 Tesla meter per ampere. Approximately. So 2.5 and 2 Tesla per meter, 2 this is ampere meter square. इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर स्क्वायर. The C is correct option. Next, figure given below shows a long straight wire of circular cross sectional area of radius A carrying steady current I. The current I is uniformly distributed across its cross section. The plot which correctly represents the variation of magnetic field B with R from the axis of conductor in the region S.
Ampere circular law, loop integral B dot dl is equal to mu dot I. The cross sectional area of this loop, जो section is given, इसकी radius is A. Suppose an imperial loop, इसकी radius is R. The magnetic field अभी inside this wire कैलकुलेट कर रहे हैं. Current bounded by this area is suppose I1. So I1 will be equal to area of this section upon area of whole section into total current. R square by A square I. इसकी सरकमफ्रेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा लूप इंटीग्रल विल बी म्यू डॉट I1 और B इंटू टोटल लेंथ होगी 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू डॉट R स्क्वायर I बाई A स्क्वायर और B इज म्यू डॉट IR बाई 2 पाई A स्क्वायर. So B is directly proportional to R. बाकी everything is constant. So this will be a straight line up to A. A तक जिस तरह से होगा, अगर ये R है, दिस इज B, तो A पॉइंट तक दिस विल बी ए स्ट्रेट लाइन. अब इसके बाहर अगर हम एक एम्पीरियन लूप लें तो इस लूप पर अगर इसकी ये यहाँ पर इस केस में R इज मोर देन A, तो बाउंडेड करंट विल बी I एंड B इंटू DL का इंटीग्रेशन विल बी म्यू डॉट I और B इंटू 2 पाई R विल बी म्यू डॉट I और B इज इक्वल टू म्यू डॉट I बाई 2 पाई R. इस पोर्शन में B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो इसके बाद जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी लाइक दिस. हैंस this is A, B, C and D. C is correct option. Next, a current I flows I dot, a current I dot flows through a metallic loop of radius R as shown in the figure. Resistance of segment ABC is half
that of ADC, magnitude of magnetic field at the center of O of the loop is. Suppose जो resistance of ADC is R. So resistance of this ABC will be R by 2, और R and R by 2 are in parallel. तो इनका रिजल्टेंट होगा R1 will be 1 upon R plus R by 1 by R by 2 का इनवर्स, और R by 3. तो पोटेंशियल डिफरेंस across AC will be I dot R by 3. Suppose this portion में current is I1 and this is current I2. So I1 will be potential difference by R by 2, that is 2 I dot by 3, and similarly I2 will be I dot by 3. This is 2 I dot by 3 and this is I dot by 3. जो ABC में करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी अपवर्ड टू दिस प्लेन. सपोज दिस इज अपवर्ड एंड I2 के कारण होगा डाउनवर्ड. सपोज अपवर्ड इज B1 एंड डाउनवर्ड इज B2. B1 will be nu dot by 4 pi into I1 इसकी लेंथ dl अपॉन r स्क्वायर. nu dot by 4 pi I dot is 2 I dot by 3 dl is जो लेंथ है वायर की पाई आर, हाफ ऑफ द रेडियस, आर स्क्वायर. 2 by 3 म्यू डॉट अपॉन 4 पाई इंटू पाई आई डॉट बाई आर. और 2 by 3 म्यू डॉट बाई 4 ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं 4 पाई इंटू पाई आई डॉट बाई आर. सिमिलरली B2 इसी तरह से कैलकुलेट करें तो वो माइनस साइड में होगा 1 बाई 3 म्यू डॉट बाई 4 पाई इंटू पाई आई डॉट बाई आर. Net magnetic field will be the sum of these two, and that will come 1 by 3 into mu dot by 4 pi into pi I dot by r. और पाई से पाई क्रॉस हो गया, म्यू डॉट आई डॉट बाई 12 आर. म्यू डॉट आई डॉट बाई 12 आर
This B is correct option. Next, two infinitely long parallel conducting wire A and B carrying current I and 2I respectively in the same direction. The wire A had uniform mass per unit length lambda and lies on the insulated floor. The wire B is kept fixed at height h above the floor. The minimum magnitude of h so that the wire A does not rise from the floor is g is acceleration due to gravity and mu dot is permeability of free space. एक वायर A and this is wire B. Wire A and this is wire B, और A में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I एंड B में जो करंट है दैट इज 2I. अगर हम A की एक पर्टिकुलर लेंथ L कंसीडर करें तो इस पर फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू B वायर B F, उसकी वैल्यू होगी म्यू डॉट, अगर दिस इज I1 एंड दिस इज I2, म्यू डॉट I1 I2 L by 2 pi d, where d is distance between these wires and this is given h, or F is equal to mu dot I1 I2 L by 2 pi h, और I1 I2 की वैल्यू पुट कर दें I इंटू 2I L बाई 2 pi h, और 2 म्यू डॉट I स्क्वायर L बाई 2 pi h. फॉर इसका जो वेट विल एक्ट डाउनवर्ड एंड वेट विल बी L length into mass per unit length lambda into g. This is W. For balanced condition F will be equal to W, or 2 mu dot I square L by 2h 2 pi h 2 pi h will be equal to L lambda g. 2 से 2 क्रॉस हो गया, L से L क्रॉस हो गया, तो म्यू डॉट I स्क्वायर पाई h इज इक्वल टू लैम्डा जी, और h विल बी म्यू डॉट I स्क्वायर बाई पाई लैम्डा जी. तो h की वैल्यू म्यू डॉट I स्क्वायर पाई लैम्डा जी, C इज करेक्ट ऑप्शन.